मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स 2022। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने गाइडलाइंस इशू की हैं क्योंकि वो एक न्यू फाइनेंस बेस्ड रैंकिंग करना चाहते हैं सिटीज़ की। तो 15 की पैरामीटर्स होंगे जिसके बेसिस पर जो है सिटीज़ को जो है अर्बन यूनिट्स को इवेल्युएट किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने सिटी ब्यूटी कंपटीशन को भी लॉन्च किया है ताकि देखें कि कैसे जो है सिटीज़ अपने आप को ब्यूटीफाई कर रही हैं। तो अब आपको पता होगा कि जो आपकी सेवरल सिटीज़ हैं, उनमें जो रेवेन्यू सिस्टम है वो बहुत ही ख़राब है। तो अब इनका बहुत ही कम रेवेन्यू होता है। अब देखो, अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो सिर्फ 0.15% ऑफ जीडीपी ही जो है म्यूनिसिपल एंटिटीज़ का रेवेन्यू है, जबकि नॉर्मल जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ भी ये 0.6% है और डेवलप्ड नेशंस में तो ये 2.1% होता है। तो हमारी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेट और सेंट्रल फाइनेंसिंग पर डिपेंडेंट है। इनकी जो है फाइनेंसिंग की जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत पुअर है। इनकी ऑडिट भी बहुत ही डिले हो जाता है, तो ऑफ कोर्स पता नहीं लगता कि कोई करप्शन है या कोई जो है दिक्कत है इनकी फाइनेंसिंग में। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत टाइम से बोला है कि इनको अपनी जो है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने चाहिए ताकि ये एक तरह से वाइबल थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बन के सामने आए। अब ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग्स होंगी क्या, तो बेसिकली इवैल्यूएट करने के लिए होगा कि क्या जो है फाइनेंशियल हेल्थ है हमारी अर्बन सिटीज़ की। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ को धीरे धीरे इससे हेल्प होगा कि कैसे वो अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको मोटिवेशन मिलेगी कि वो बाकियों से सीख कर म्यूनिसिपल फाइनेंस रिफॉर्म्स लेकर आएँ। अब यूएलबीज़ जो हैं 15 इंडिकेटर्स पर जो हैं वो इवैल्यूएट किए जाएंगे और 3 की म्यूनिसिपल फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर्स होंगे: रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस और फिस्कल गवर्नेंस। अब ये पूरी जो रैंकिंग होगी ये आपके 4 पॉपुलेशन कैटेगरीज़ की सिटीज़ के हिसाब से होगी। अबव 4 मिलियन की सिटीज़, फिर बिटवीन 1 टू 4 मिलियन सिटीज़, 100,000 टू 1 मिलियन की सिटीज़ या फिर लेस देन 1 लाख की सिटीज़। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस इसका यही है, क्रिटिकल इंसाइट्स मिलेंगे कि कैसे फाइनेंसेस मैनेज किए जा रहे हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ द्वारा, और यूएलबीज़ अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट भी कर पाएंगी। ऐसे ही सिटी ब्यूटी कंपटीशन भी है। हमारा मोटिव ये है कि हम जो है ब्यूटीफुल, इनोवेटिव और इंक्लूसिव पब्लिक स्पेसेस बनाएं अपनी सिटीज़ में। उसके लिए 5 ब्रॉड पिलर्स जो है वो बनाए गए हैं, उसके बेसिस पर सिटीज़ को रैंकिंग मिलेगी: एक्सेसिबिलिटी, अमेनिटीज़, एक्टिविटीज़, एस्थेटिक्स और इकोलॉजी। और भी कुछ डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट के जो है इनिशिएटिव जो है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लिए हैं, वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रमापा टेम्पल। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने फाउंडेशन स्टोन रखा है डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर एट रामापा टेम्पल। तो रामापा टेम्पल शिवा जी को जो है, गॉड शिवा को जो है वो डेडिकेटेड है। काकटिया डायनेस्टी के जो रूलर थे काकटी गणपति देवा जी, उन्होंने इसको बनाया था। और क्योंकि इनका इस टेम्पल का नाम रमाप्पा है, तो क्यों है ये नाम? क्योंकि जो इसके चीफ स्कल्प्टर थे रमाप्पा जी, उनके नाम पर ही नाम रखा गया है। शायद कह सकते हैं कि अकेला ऐसा टेम्पल है ये जो उसके आर्किटेक्ट के नाम पर जो है रखा गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी स्टेटस मिला 2021 में, हमने किया था इसको। ठीक है, अर्थक्वेक प्रूफ है ये। इसमें सैंड बॉक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। जो फाउंडेशन पिट है उसको सैंड लाइम, जैगरी और ब्लैक मायरो बैलन फ्रूट से जो है वो फिल किया गया है, ताकि एक तरह से कुशन बन जाता है ये, ताकि अर्थक्वेक से रेजिस्टेंट बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रोड फेटेलिटीज़ इन इंडिया। आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा, जिसमें कहा गया है कि हर 8 लोग जो 10 में से 8 लोग जो हैं, लगभग 83% कह सकते हैं, वो बिना सीट बेल्ट के जो है, अगर जो है उनका एक्सीडेंट हुआ तो उसमें से वो 10 में से 8 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट का नाम है रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। इन डेप्थ एनालिसिस दे रही है रिपोर्ट और ओवरव्यू दे रही है कि रोड एक्सीडेंट्स कैसे हो रहे हैं इंडिया में। तो इसमें जो डेटा यूज़ किया गया है वो इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम से निकाला गया है। अब यंग एडल्ट्स जो हैं, अब ये एक बहुत ही दुख भरी चीज़ है कि यंग एडल्ट्स जो हैं 18 टू 45 ईयर्स के जो हैं यंग एडल्ट्स हैं, वो 2/3 ऑलमोस्ट जो हैं, या आप कह सकते हो 3/4 भी अगर आप इसको लगा सको तो आप, ये वैसे तो 2/3 हुआ ऑफकोर्स, 2/3 लगभग विक्टिम्स जो हैं वो 2022 टर्न में रहे हैं। अब जो है रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो डिक्रीज़ तो हुए 2021 में एज़ कम्पेयर टू 2019, लेकिन फेटेलिटीज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हुई। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ फेटेलिटीज़ हैं। उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा कार ऑक्यूपेंट्स के जो है ना सीट बेल्ट पहनने की वजह से डेथ हुआ।
2 आउट ऑफ एवरी 3 जो है वो पर्सन्स जो कि हेलमेट नहीं पहन रहे थे उनकी भी डेथ हुई है। अब हम आईरैड देखते हैं क्या है, तो ये इंटीग्रेटेड जो है आपका रोड एक्सीडेंट डेटाबेस जो है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसको बनाया है। वर्ल्ड बैंक ने फंडिंग दी है रादर। अब ये डेटा लाए कहाँ से हैं? 4 स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हाईवेज एंड हेल्थ डिपार्टमेंट से जो है डेटा लिया गया, उसके बेसिस पर ये जज किया गया कि कितने एक्सीडेंट्स हुए और कितनी डेथ हुई हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। तो सो ये टॉपिक आपके जो है इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई जो है उन्होंने कहा है, रिकमेंडेशंस दिए हैं कि कैसे जो है एनसीआरटीसी को कितनी स्पेक्ट्रम की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो अपने आरआरटीएस कॉरिडोर्स, जो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है आपके कॉरिडोर उसके बना सकें। तो एनसीआरटीसी क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट की उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हरियाणा, राजस्थान और एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट के साथ एक जो है जॉइंट पार्टनरशिप है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको एडमिनिस्टर कर रही है और रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम का प्रोजेक्ट इसको इम्प्लीमेंट करने का काम मिला हुआ है। 21 अगस्त 2013 में इसको बनाया गया अंडर कंपनीज एक्ट, और सेक्रेटरी जो हैं आपके अर्बन डेवलपमेंट के, वो इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम क्या होता है? एक मल्टी स्टेट रीजन है, आपको पता है एनसीआर, तो वहाँ पर लोगों को रोड ट्रांसपोर्टेशन की बजाय जो है एक फास्ट रेल बेस्ड जो है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देने के लिए ये बनाया जा रहा है। तो आपस की जो एनसीआर रीजन की जो एरियाज़ होंगे उनको जो है ये कनेक्ट करेगा और रोड के ऊपर से जो है ट्रैफिक को एक तरह से शिफ्ट करेगा फास्ट रेल सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, आईसी मून ऑफ जुपिटर। साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा फ्रांस में आने वाले मंथ में। जूस मिशन जो है यूरोप का पहला डेडिकेटेड रोबोटेड मिशन है जुपिटर के ऊपर, और वो 2031 में जाकर इन मून्स ऑफ जुपिटर पर पहुंचेगा। तो मून्स ऑफ जुपिटर कौन से हैं? यूरोपा, गैनीमीड एंड कैलिस्टो। अब जो ये आईसी मून्स ऑफ जुपिटर हैं, कहा जाता है कि यहाँ पर जो है लिक्विड वाटर जो है इनके फ्रोजन सरफेसेस के नीचे है, और अगर ऐसा हुआ तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ी हम डिस्कवरी कर पाएंगे वाटर की। तो ये जूस जो है, ये आपका मिशन जो है ये 10 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर जाएगा, और ये जो है इंटरनल ओशंस को वहाँ पर पेनेट्रेट करके उसको स्टडी करेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन। तो गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा जा रहा है कि डीलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असम जो है वो बिगिन कर दिया है। डीलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो सेंसस डेटा ऑफ 2001 के बेसिस पर किया जाएगा, और ऐसे ही जो डीलिमिटेशन जो 1976 में किया गया था वो 1971 के डेटा पे किया गया था। तो डीलिमिटेशन अंडर आर्टिकल 82 किया जाता है हर सेंसस के बाद, और इससे में डिटरमिन किया जाता है कि क्या जो आपकी पार्लियामेंट्री या स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसीज की बाउंड्री रहेंगी, और जहाँ तक हो सके ये कोशिश की जाती है कि सारी असेंबली सीट्स जो है या सारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनकी जो है पॉपुलेशन लगभग सेम रहे। ठीक है, जो ये डीलिमिटेशन किया जाता है ये कोलैबोरेशन विद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किया जाता है। इस कमीशन में एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया और रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी तक टोटल इंडिया में 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन जो है बनाए गए हैं और उन्होंने डीलिमिटेशन किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, धनु यात्रा आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो धनु यात्रा फेस्टिवल आफ्टर अ गैप ऑफ 2 ईयर्स शुरू हुआ है बारगढ़ में, उड़ीसा में। तो ये एक एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, जिसमें क्या होता है कि विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये सबसे पहली बार 1947 और 1948 के बीच में किया गया था जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस ली। तो इसमें होता क्या, थीम क्या होता है इसका, कि एम्परर उग्रसेन जिनको जो है कंस जो है उन्होंने जो है वो डिथ्रोन कर दिया था, लेकिन उसके बाद कंस का वध करके श्री कृष्ण ने जो है एक तरह से उग्रसेन को दोबारा से रिस्टोर किया था। तो उसको हम एक तरह से गुड ओवर ईविल की जो है विक्ट्री है उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए इस धनु यात्रा को करते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दिस टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is City Finance Rankings 2022. This topic is important for your governance section. So recently, Union Ministry of Housing and Urban Affairs has launched certain guidelines for a new finance-based ranking of cities called the City Finance Rankings 2022. So these will be evaluating our urban units on 15 key parameters. And Ministry has also launched a separate ranking called City Beauty Competition, so as to evaluate our cities on the basis of beautification. So you know that there is a problem in our cities where revenue is very low from municipal bodies. So currently, even the own revenues which have been generated by municipal entities in India is barely 0.15% of the GDP, compared to 0.6% in developing countries and 2.1% in developed countries. So this means that we have high dependence on funding from both state and central exchequer. We have poor management of finances. We are having a delay in audit of financial reports, so the true picture does not come out quickly. Also, central government has been maintaining that these urban local bodies are crucial to emerge as a third tier of government, so that's why robust finances of these bodies are important. So what are these rankings? So the aim of these rankings is to evaluate the quality of their current financial health, so as to help these bodies to improve over time by learning from each other. It will also motivate the status officials and decision makers to implement municipal finance reforms. So there will be 15 such indicators, which will be broadly classified in three municipal finance assessment parameters, namely resource mobilization, expenditure performance, and fiscal governance. So these rankings will be done at four population categories: cities which are having above 4 million population, cities having 1 to 4 million population, cities having 1 lakh to 1 million population, and less than 1 lakh population. So of course the significance is that it will provide critical insights into the makers, critical insights to policy makers regarding the state of finance of urban local bodies. Urban local bodies will also be able to self evaluate so that they can improve their performance over time. Then what is this city beauty competition? So the aim of this competition is to create beautiful, innovative, and inclusive public spaces in our cities, and that's why five broad pillars have been made, which will be classifying our cities based upon accessibility, amenities, activities, aesthetics, and ecology. So there are several other initiatives for urban development also. And so the next topic is Ramappa Temple Art and Culture is the topic for it. So, President of India has recently laid the foundation stone for the development of pilgrimage infrastructure at Ramappa Temple. So, this temple is dedicated to Hindu god Shiva, and it's a Kakatiya style Hindu temple which was built during the Kakatiya ruler Ganpati Deva under the authority of his, of course, chief commander Rudrasamani. And this temple has got its name Ramappa because of its chief sculptor known as Ramappa. So we can say that perhaps it is the only temple in India which is named after its architect. It has also been made a UNESCO World Heritage Site in 2021, and it's an earthquake-proof temple. It is using the sandbox technique, in which the foundation pit is filled with sand, lime, jaggery, and black blend fruit, and this is acting as a cushion in case of earthquakes. So the next topic is road fatalities in India. This topic is important for your social issues. So a report has been published by Union Ministry of Road Transport and Highways, and it has said that about 8 out of every 10 occupants, which is about 83% of occupants, were killed in accidents across India who were not wearing seat belts. So this report is Road Accidents in India 2021 report. It gives in-depth analysis and overview of the road accidents in India, and the data has been processed, or data has been collected from the integrated road accident database system. As per the report, young adults in the age group of 18 to 45 years accounted for about 67.6% of victims during 2021. Of course, the road accidents decreased by 8.1% in 2021 as compared to 2019, but the fatalities increased during this period. Uttar Pradesh has Uttar Pradesh accounts for the largest share of such fatalities, and Uttar Pradesh also reported maximum deaths of car occupants for not wearing seat belts. Also, 2 out of every 3 people who died in road crashes on two-wheelers were not wearing helmets. Then what is this integrated roads
road accident database. So this is an initiative of Ministry of Road Transport and Highways, and it is being funded by World Bank. It collects data from four key stakeholder departments: police, transport, highways, and health departments. So whatever data that is collected from these departments are considered as accidents, and it is collected from all over the country. So the next topic is National Capital Region Transport Corporation. This topic is important for your economy section. So Telecom Regulatory Authority of India has recently released recommendations on spectrum requirements of NCR region. NCRTC for trained control systems of RRTS corridor. So RRTS is Regional Rapid Transport System. Okay, transit system. So NCRT is a joint partnership between central government and several other state governments who are occupying the NCR region: Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, and city of Delhi. It works under the administrative control of Ministry of Housing and Urban Affairs, and it is mandated to implement the Regional Rapid Transit System project. So it was incorporated in 2013 as part of the Companies Act, and Secretary of Urban Development is acting as the ex officio chairperson of this NCRTC. Regional Rapid Transit System will provide this multi-state region with a fast rail system, and it will decongest the roads that connect the NCR region. Okay, so the next topic is the icy moon of Jupiter. So this topic is important for your science and tech section. So European Space Agency has announced that they will be celebrating the JUICE mission, that is Jupiter Icy Moons Explorer mission, next month in France. And this JUICE mission is due to reach the planet in 2031. It will be studying the icy moons of Jupiter, Europa, Ganymede, and Callisto. So these icy moons of Jupiter are interesting because they are believed to be hosting oceans of liquid water beneath their frozen surfaces. And JUICE will be equipped with scientific instruments so as to penetrate these ice radars. I'm sorry, so as to penetrate these ice shelves and to study the internal oceans. So the next topic is Delimitation Commission. So this topic is important for your governance section and polity section also. Recently, Election Commission of India has said that they have begun the process of delimiting the assembly and parliamentary constituencies of Assam, and this process would be based upon the census data from 2001. The last delimitation of constituencies in Assam was done in 1976 based upon the 1971 data, and these delimitations are carried out by Delimitation Commissions Act under Article 82. Parliament enacts this particular legislation after every census to determine the number and boundaries of constituencies in a way that all the population of all seats is so far as practicable remains the same. It works in collaboration with the Election Commission of India, and it is composed of a retired Supreme Court judge, Chief Election Commissioner of India, and respective state election commissioners. So in the history of Indian Republic, we have had these delimitation commissions set up four times, once in 1952, 1963, 1973, and 2002. So the next topic is Dhanu Yatra. This topic is important for your art and culture section. So Dhanu Yatra festival has recently begun after a gap of 2 years in Bargarh, Odisha. It's an annual drama-based open-air theatrical performance, and it marks the victory of good over evil. It started in 1947 and 1948 period as part of the celebrations of India's independence. So what is the theme of this yatra? So it celebrates the story in which the Emperor Ugrasen was dethroned by angry Kans, but then after Lord Krishna killed Demon King Kans, and Ugrasen was restored to the throne of Mathura. This marks the victory of good over evil, and that's what we celebrate in this Dhanu Yatra. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.